time Ajay Devgn dons a Sardar avatar, he creates history. 2012 में उन्होंने Son of Sardaar से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी और एक बार फिर अजय is all geared up with the second installment. इस बार अजय देवगन अपने फैंस के लिए लेकर आ रहे हैं Sons of Sardaar, which will not be a comedy like the first one, which was only Son of Sardaar. But this time it's based on a true story and called Sons of Sardaar. Recently अजय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस सेकंड इंस्टॉलमेंट का फर्स्ट पोस्टर रिलीज किया, where he wrote, "Unveiling Sons of Sardaar, my tribute to warriors of Saragarhi, a tale of rage, of love, of bravery. #Sons of Sardaar." Exciting, isn't it? हालांकि फिल्म की ज्यादा डिटेल्स अब तक रिवील नहीं हुई हैं, एक्सेप्ट द थीम, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है. Sons of Sardaar is based on the story of the 21 Sikhs who fought to death in the 1897 Battle of Saragarhi. एक ऐसी लड़ाई जहां 36 सिख रेजिमेंट के सिर्फ 21 सिख जवानों ने अपनी पोस्ट बचाने के लिए 10,000 अफगानी सोल्जर्स का सामना किया और अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी. Sounds brave, doesn't it? Ajay Devgn will start working on this magnum opus only after his most awaited Shivai is released. फिलहाल द एक्टर शिवाय के प्रमोशंस की प्लानिंग में काफी बिजी हैं और सोर्सेस की माने तो द ट्रेलर ऑफ द फिल्म इज सेट टू रिलीज ऑन 7th August इन अ वेरी ग्रैंड वे. शिवाय एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है which also features debutante Saisha, who is the grandniece of veteran Bollywood actress Saira Banu, along with Erica Carr and British child actor Abigail Eames. Shivai is scheduled to hit the screen this Diwali and likely to clash with Karan Johar's Ae Dil Hai Mushkil.